Hello everyone, I am Annie Muskan and I would like to welcome you all to Triumph Stories by Chosen Generation. Chosen Generation एक स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में क्रिश्चियन यूथ पर काम कर रही है। चोजन जनरेशन पाकिस्तान के क्रिश्चियन यूथ को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में गैदर करने के साथ साथ पाकिस्तान में क्रिश्चियन स्टूडेंट बॉडी नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश करे। इसके साथ साथ क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को खुदा की तरफ माइल करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज चोजन जनरेशन अरेंज करती रहती है। ट्राइम्फ स्टोरीज भी इसी काविश का एक छोटा सा हिस्सा है। ट्राइम्फ स्टोरीज चोजन जनरेशन की तरफ से एक जरिया है यूथ की, क्रिश्चियन यूथ के कामयाब नौजवानों की सक्सेस को सेलिब्रेट करने का, उनकी सक्सेस स्टोरीज को सुनने का, समझने का और उनसे सबक सीखने का। आज के हमारी एपिसोड के गेस्ट पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी में काफी जाने माने हैं, अपने नाम और काबिलियत की वजह से बहुत मकबूल हैं। मैं ये चीज मेंशन करना मुनासिब समझती हूँ कि मेरे क्लास फेलो रह चुके हैं ये। हमारा ताल्लुक सेम स्कूल और सेम यूनिवर्सिटी से रहा है, इनफैक्ट के चोजन जनरेशन के पार्ट भी रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैथ कम्युनिकेशन में बैचलर्स करने के बाद मिजूरी स्टेट यूनिवर्सिटी से इस टाइम मास्टर्स की डिग्री परस्यू करने वाले और अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने से पहले ही पीएचडी की डिग्री की स्कॉलरशिप हासिल करने वाले नन अदर देन अभिषेक गिल हमारे साथ आज मौजूद हैं। और लेट्स लिसन टू द वंडरफुल एंड ट्रेमेंडस जर्नी ऑफ अभिषेक गिल थ्रू हिज वर्ड्स। थैंक यू सो मच एनी। बहुत 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 शुक्रिया इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। इस चीज़ का सारा फजल और इस चीज़ का सारा जलाल खुदा यीशु मसीह को जाता है कि मैं इस लायक हूँ कि मुझे खुदा ने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी और अभी भी दे रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। Well, it's a pleasure to have you, somebody who has made his name through his not only his hard work but आपने अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी परसिस्टेंस से ये नाम कमाया है। सो ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई है और किस तरह से आप इस पॉइंट पर आए हो? इस टाइम आप टीच भी कर रहे हो अमेरिका में। सो व्हाट्स दिस ऑल अबाउट, लाइक पूरी जर्नी किस तरह से रही है और किस तरह से स्टार्ट हुई है? सो जर्नी तो बहुत लंबी थी बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिस तरह आपको पता है कि हम एक स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे कैथीड्रल लाहौर कैंट के अंदर। मैंने अपना मॉन्टेसरी से लेके आप कह लें कि 10th क्लास तक जो है वहाँ तक ही पढ़ा, 13 साल। कैथीड्रल से पढ़ने के बाद एक कॉलेज था, वहाँ पे मैं गया जो मेरे घर के पास ही था। फिर माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट आई वाज वेरी रिलक्टेंट, आई एम वेरी रिबेलियस फ्रॉम माय चाइल्डहुड। तो मैंने तब तो रिबेल नहीं किया because obviously I respect and adore them a lot. I said okay, that's fine, if you want me to become a software engineer I will be. मैंने अपना एडमिशन जो था वो लिया। आई गो विद द थिंग जो मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि वी वांट टू सी इंजीनियर इन आवर फैमिली, तो मैंने कंप्यूटर साइंसेस के अंदर एडमिशन लिया। मुझे उसकी बिल्कुल समझ नहीं आई, जावा सी प्लस प्लस लैंग्वेज और ये और वो इस तरह तो मेरे दिमाग के ऊपर से गुजर रही थी। तो फिर आई रिक्वेस्टेड माई पेरेंट्स, आई सेड कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, तो गिव मी अ चांस एंड आई विल मेक यू प्राउड। तो at that point they were very unsure, they were like well if we are going to invest on you तो फिर हमें जो है उसका फ्रूट भी अच्छा चाहिए। मैंने फिर सर्च करना शुरू की। आई गॉट टू नो कि ये पाकिस्तान के अंदर 2-3 स्कूल ही हैं, बीएनयू, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और एनसीए, जो मीडिया के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही गया, वहाँ पे ही पहली दफ़ा एडमिशन लिया और वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। 30,000 बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे उस टाइम पे, इनरोल थे। But I was the only Christian in my department, and I'm very proud of it. कुछ लोग तो पहली दफा एक क्रिश्चियन से मिल रहे थे, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस, कुछ लोगों के क्वेश्चंस इतने ज्यादा थे, तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट कि उनके जो क्वेश्चंस हैं, उन लोगों के जो स्टीरियोटाइप्स हैं, स्टिग्मास हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है एज लाइक फॉर अ क्रिश्चियन पर्सन, मैं उसको चेंज कर पाया हूँ। और या that's how I started my education journey, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर तक। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बाद जो आपकी परफेक्ट जर्नी शुरू हुई है, जो एक बिल्कुल नई जर्नी अमेरिका में शुरू हुई है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? So when I was in University of Lahore, I used to pray a lot. Like I used to say, God, okay, that's fine. I'm in University of Lahore. I thank you for everything what you have given me. But it's not like my final goal. I wanted to do more. I wanted to excel more. I wanted to make my community, my parents, everyone proud. So what happened was at that time
I got to know about like cultural exchange program. तो मैंने ऐसे ही जिसको कहते हैं ना शुगर शुगर में अप्लाई कर दिया। मैंने कहा मेरा कहाँ होना है, मतलब इतना मैं लकी। तो मैंने अप्लाई किया विद इन जस्ट 15 to 20 days, लाइक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यूएस एम्बेसी एंड दे वांटेड मी कि मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ। मुझे लगा फिर भी कोई प्रैंक हो रहा है, और दैट्स नॉट ट्रू। दो दो महीनों के अंदर जो आई वाज इन यूएस, माय जॉब वाज टू go to different states, educational institutes or like different events के ऊपर पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज, जो पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज है, वहाँ वो रिप्रेजेंट करना. So I was getting paid by US State Department for doing that, and it was a very wonderful job. With that, I was studying in Southeast Missouri State University. I was pursuing my undergrad degree in media and communications from there as well. So मैं वो कर रहा था. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. मैं तो खुदावन का बहुत शुक्र अदा किया करता था, बिकॉज आई वाज प्रेइंग अ लॉट लाइक इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एट दैट टाइम. बट उसी दौरान में टू नो दैट माय मदर वाज वेरी सिक, और मेरी मामा को पैरालिसिस अटैक और ब्रेन हैमरेज हो गया. मैंने अपना सब कुछ छोड़ा एंड आई केम बैक टू पाकिस्तान. जब मैं पाकिस्तान गया, आई वाज हेल्पिंग माय मदर अ लॉट. आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जो हैंड टू माउथ आप कह लें कि ये बात थी. तो उसके बाद अब मेरी बहन भी पढ़ रही थी. शी स्टार्टेड गोइंग टू कैनियन कॉलेज. आई वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, एंड देन मेरी मामा भी बीमार थी और मेडिकल एक्सपेंसेस भी. एंड देन एट द सेम टाइम माय फादर गॉट वेरी इल एज वेल. ही इज अ डायबिटिक पेशेंट. तो आई हैड टू टेक डिसीजन कि मुझे अब क्या करना है. मतलब whatever the savings we had at that time, like all gone in like medical expenses and in our educational expenses. So I started working in different call centers like DGS. So I struggled a lot. Like I was just jumping from one call center to another BPO, and I don't forget like the time I struggled a lot. Like I used to cry a lot. Like बाइक पे जाते हुए कि खुदाया मतलब ये क्या है कि इतनी ऊपर लेके गया और एकदम मैं बिल्कुल ही मतलब मुझे नीचे आ गया. कि आई रिमेम्बर लाइक रात को सर्दियां होती थी दिसंबर के अंदर, और मैं मतलब फेज 6 अपने घर से कैवलरी ग्राउंड बाइक के ऊपर जा रहा हूँ. कभी पेट्रोल खत्म हो जाना, कभी टायर पंचर हो जाना, और पढ़ भी रहा था, अपने पेरेंट्स को भी संभाल रहा था. उसी दौरान जो था, खुदा ने आपकी जिंदगी में जब कोई काम करना होता है तो खुदा आपकी जिंदगी में मुश्किलात परेशानियां लेके आता है. तो उसी दौरान के अंदर जो था, मैंने एक जगह पे इंटर्नशिप अप्लाई की और मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट की. वो एक सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स से एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजीज के नाम से कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी. आई स्टार्टेड वर्किंग देयर एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट. उसके अलावा मुझे उन्होंने एक जॉब ऑफर की इंटर्नशिप से ही, विच वाज अ बिग थिंग. वो थी पीपल ऑपरेशंस इन एचआर. जब आई वाज इन अंडरग्रेड एंड आई वाज लाइक गॉड, लाइक दिस इज सच अ बिग थिंग फॉर मी. लाइक इस तरह की जॉब जो है लोगों को नौकरी करने के वो डिग्री करने के बाद भी जल्दी नहीं मिल रही होती है. एंड लाइक इन पाकिस्तान उस टाइम भी मैं बहुत लाइक रेस्टलेस था. और फिर मैंने कहा नहीं खुदा ये तो नहीं, मतलब इससे भी कुछ बड़ा करना है. मैंने आई अप्लाइड इन एमएसयू तब उसी दौरान, और मैंने उनको बताया मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया हुआ है, तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस करना चाहता हूँ. व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट द लाइक फी स्ट्रक्चर, 70-80 हज़ार डॉलर थे. तो मैंने कहा 70-80 हज़ार डॉलर तो मतलब इट्स सच अ बिग थिंग. आई कैन नॉट अफोर्ड इट. लाइक मैं तो कर भी नहीं सकता. मैंने कहा खुदा मुझे एक ख्वाब दिखाया आपने, और लाइक मेरी आगे भी मदद तू ही करेगा. विद इन 2 to 3 days लाइक दे ईमेल मी, दे सेड हमारा डिपार्टमेंट जो है आपको फुली फंड करना चाहता है, 150% स्कॉलरशिप देना चाहता है, आप यूएस आए, और हम जो है वी विल गिव यू स्टाइपेंड फॉर द वर्क यू आर गोइंग टू डू. अब मुझे खुशी तो इस चीज़ की थी कि मैं यूएस जा रहा हूँ, मुझे मास्टर्स की डिग्री फुली फंडेड मिल गई हुई है, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई करिकुलर एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज व्हाट आई हैव डन लाइक इन द पास्ट. मास्टर्स करने से पहले फिर मैंने कहा खुदाया काम कैसा होगा, पता नहीं क्या काम मेरे से करवाएंगे वो, पता नहीं कैंपस जॉब होगी. यहाँ पर जब मैं आया तो आई गॉट टू नो दैट आई विल बी टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी, एंड आई विल बी टीचिंग अंडरग्रेड स्टूडेंट्स पब्लिक स्पीकिंग एंड इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, विच वाज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज दे डोंट लेट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू टीच लाइक यहाँ के जो सिटीजन्स हैं या यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज
they believe that international students are not that proficient. हुआ फिर ये कि मैं public speaking पढ़ाना शुरू हो गया, intercultural communication पढ़ाना शुरू हो गया, उससे पहले मैं communication survey and theory पढ़ा रहा था। तो खुदा मेरी जिंदगी में बहुत जलाल के साथ काम कर रहा था और अभी भी कर रहा है। अभी भी आई एम ग्रेजुएटिंग नेक्स्ट मंथ इन May 2023 with the degree in communication in media and communication। अब रिसेशन चल रही, ले ऑफ चल रहे। अब मुझे पता था कि यार जॉब तो लाइक यहाँ पे लोग जो ढूंढ रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स, सो व्हाट आई एम गोना डू, लाइक गॉड व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान फॉर मी, व्हाट शुड आई डू, लाइक आई वाज सो डिस्ट्रैक्टेड, आई डिडंट हैड एनी प्लान, लाइक आई वाज very helpless because I don't wanted to tell my parents that okay, I completed my degree but now I don't know what to do. um like from Texas Tech, which is a very good school here, or communication के अंदर तो like one of the best school in the world है वो, they emailed me, they wanted me to like pursue my PhD degree from there, like which is a doctorate program. And it was so surreal because at first I believed that this is not real. how they can how they can offer me a PhD program before even I completed my master's degree. They don't know like my CGPA, they don't know like what I'm gonna do in my final semester. So ये सारा जलाल खुदा को है कि भी एक मेरा काम खत्म ही होता है तो दूसरा काम जो है ना, मतलब खुदा जो है मेरे लिए करता है। तो उन्होंने कहा हम आपको फुली फंडेड PhD प्रोग्राम के अंदर एडमिशन देना चाहते हैं, और उसके साथ साथ just because I believe and I feel after working in different fields like in call centers and in HR and in media and like doing a lot of stuff, I believe that the peace of mind I found in teaching is exceptional, and that's what I wanted to do in my life as a professor, as associate professor, जो भी। तो अभी I'm working as an instructor in university, like I teach. That's what I'm doing, and that's what I'm up to, and yeah. well that's wonderful। और जैसे कहते हैं कि खुदा का हमेशा हमारे लिए सबसे बेहतर प्लान होता है, तो सो फार आपकी लाइफ में खुदा का बहुत ही बेहतरीन प्लान रहा है। सो Yeah. इस सारी जर्नी में फैमिली का क्या रोल रहा है आपकी? Yeah, to be honest, if I talk about my family is very supportive. Like, oh, since we don't belong from a very rich family, like we belong from a lower middle class family. मेरे पापा की जो सोच थी और जो उनका गोल था, जो उनकी डिजायर, जो उनका ड्रीम था कि उनके बच्चे जो है अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाएं ताकि उनको वो अच्छा एक्सपोजर मिले, ताकि जब वो उन स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों से निकलें तो एक अच्छे इंसान तो बने ही बने, बट उनके पास एक अच्छी डिग्री भी हो, अच्छा नॉलेज भी हो, अच्छी इंफॉर्मेशन भी हो, ताकि वो जब रियल वर्ल्ड में जाएं, जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिले, अच्छी मिले। तो throughout like our childhood we went to like good schools and good colleges and universities, no matter how expensive it was, like how no matter how expensive the commute from like our house to that university was, but he wanted like the best for us. And my mother helped us a lot, like in upbringing, like from our childhood, like we saw her कि वो दुआ में, वो वर्शिप में, वो चर्च के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। एंड दैट्स व्हाट शी वांटेड कि उनके बच्चे जो हैं वो खाली नाम के क्रिश्चियन ना हो, बट उनके अंदर जो क्रिश्चियन एट्रीब्यूट्स हैं वो भी नजर आए। सो माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव लाइक थ्रू आउट माय जर्नी। या Family support matters a lot. In fact, we owe our success to our family. So, what is the one thing that motivates you? बिल्कुल new world में हो, तो वहां पे क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है? The thing which motivates me a lot is just is my community, is my family. I'm a first generation student, so that thing motivates me a lot. I am अपनी community में जब देखता था कि मोस्टली जो है वो लड़के काम नहीं कर रहे होते पाकिस्तान के अंदर, और बहनें काम कर रही होती थी, तो मैं कहता था कि दैट्स नॉट व्हाट आई वांट। आई मीन लाइक आई वांटेड टू चेंज द डायनामिक्स। मैं अकेला तो नहीं चेंज कर पाऊंगा, बट शायद अगर मैं किसी की जिंदगी में 0.5% भी तब्दीली लेके आ रहा हूँ तो डेफिनेटली लाइक अगर मैं कोई अपनी काम से, अपनी बात से, अपनी एजुकेशन से, अपनी किसी हरकत से उसकी जिंदगी में उसको मुतासिर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली लाइक आई अचीव माय गोल। सो दैट वाज माय मोटिवेशन to inspire people in especially in Christian community. You are kind of changing the dynamics a lot, और आप रियल में somehow बहुत सारे लोगों के लिए आप
role model हो. So one thing that you will share, that you will give as an advice, as a message to our Christian youth. Oh, definitely. So the first thing is, I'm gonna take like 5 minutes on that. First thing is procrastinate ना करें. Procrastination बहुत बुरी चीज है ये वाली. आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, नहीं कर मतलब ये वो कभी कल नहीं आएगी. If you are like walking with God, तो प्रोक्रेस्टिनेट ना करें कुछ चीज को. जस्ट यूटिलाइज योर टाइम. फर्स्ट प्रोक्रेस्टिनेट ना करें. दूसरा, अपने टाइम को जो है उसकी क्या कहते हैं, वैल्यू को समझे. जो भी आप अच्छा काम कर रहे हो अपने तक रखो. लाइक शेखी से, शोबाजी से गुरेज करो. बिकॉज इफ यू डू इट देन आपका काम का जो वो है वो एसेंस ही नहीं रहेगा पूरा. बिकॉज यू आर जस्ट लाइक doing it for people, not for, I'm sorry, you're doing it for people, not for yourself. और अपने माँ बाप की इज्जत करो, पढ़ाई करो. एजुकेशन इज द ओनली वे, लाइक यू नो, टू गेट आउट ऑफ poverty or from a country like where there is a lot of persecution, where there is a lot of like you know suppression. And I live here in the United States, but my heart is in Pakistan. So don't forget your roots. But खुदा ने ये नहीं कहा कि बस अपने मुल्क में ही काम करो. खुदा ने पूरी दुनिया बनाई है. गो टू डिफरेंट प्लेसेस, गो टू डिफरेंट कंट्रीज. आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, गो टू लाइक यूए, गो टू लाइक यूके, गो टू लाइक कहीं भी जाओ, काम करो वहां पे, पढ़ो वहां पे. और मेरी मामा बोलती हैं हीला करो तो वसीला होएगा. तो हीला, इफ वी डू समथिंग, इफ वी प्रे फ्रॉम गॉड, अगर हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदा को कहेंगे कि खुदाया वी रियली वांटेड दैट, और अगर हम उसके लिए मेहनत भी करेंगे, डेफिनेटली इट्स गोना हैपन. एंड आई एम हियर फॉर like any kind of help if you want, even if it's related to education. Most prominently, I would love to help you out in educational matters, because I can write recommendation letters as an you know इंस्ट्रक्टर. खुदा ने मुझे इस लाइक यू नो प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है. अगर खुदा ने मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया तो मुझे भी उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए. क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में प्रोग्रेस कर सकती है तो उसका एक ही टूल है, एजुकेशन. और सो फार आपने बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया है एक क्रिश्चियन नौजवान होते हुए. आई कैन से दैट आई एम प्राउड कि हमारा, एक तो हम सेम कम्युनिटी से हैं, दूसरा हम सेम स्कूल से रहे हैं और सेम यूनिवर्सिटी से रहे हैं. सो आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ अचीव किया. और सिर्फ आपने अचीव नहीं किया, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं. सो थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग अस. आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है. सो नाज़रीन, दैट वाज द टेस्टिमनी, द सक्सेस स्टोरी ऑफ अभिषेक गिल. वी होप यू लर्न समथिंग. हमारा क्राइम स्टोरीज आप तक लाने का मकसद ये है कि आपको इन स्टोरीज में से कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कुछ ना कुछ सबक मिले, कुछ ना कुछ समझने को मिले. एंड वी होप दैट यू लर्न समथिंग. आज की एपिसोड बस इतनी ही थी. वी होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड. डोंट forget to like, share, and subscribe to us. Chosen Generation is going to bring you great success stories in the form of crime stories. God bless you all. See you in next video. Thank you.